Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, you all know your exams are going to get started. I think yesterday itself your exams have started and your first exam was of English language. On 20th of July, 20 जुलाई को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, right? So I hope all of you will score good marks in maths, and if you have any problem, any query, please comment in the comment section so that I can explain it to you before the exam, because my expectation from everybody is 20 out of 20 and I hope everybody is going to get that marks. Okay, so as you all can see that today's topic is division of fractions, right? But before explaining this topic, yesterday itself I have explained you about reciprocal of a fraction, right? I have explained you about reciprocal of a fraction. So today I am going to write few numbers and you have to pause the video and reply to me in the comment section about the reciprocals. I will be telling the answers also, you have to match them. So my first question for the reciprocal is, what is the reciprocal of 2? What is the reciprocal of 2? Please pause the video and reply to me in the comment section. Yes, the reciprocal of 2 is 1 upon 2. राइट अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट इसका डिनोमिनेटर क्या मानेंगे? यू विल कंसिडर 1 एज द डिनोमिनेटर इफ देर इज नो डिनोमिनेटर गिवन इन एनी पर्टिकुलर नंबर. सो बाय डिफॉल्ट यू आर गोइंग टू कंसिडर इट एज 1. सो हाउ डू वी फाइंड आउट द रेसिप्रोकल? वी यूज टू एक्सचेंज द प्लेसेस. वी मेक द न्यूमरेटर एज द डिनोमिनेटर and the denominator as the numerator. Why we have to do this? Because reciprocal means multiplying a number with a certain number so that the product should be 1. मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर को ऐसा नंबर जिससे आप उस नंबर से पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई करें एंड द आंसर शुड बी 1. तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा. आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल बी 1 ओनली, राइट? सो वन मोर क्वेश्चन. सो प्लीज stay focused and tell me the answer. What is the reciprocal of 3 upon 4? Please pause the video and reply to me in the comment section and match your answers from here. Yes, the reciprocal of 3 upon 4 is 4 upon 3. So the answer reciprocal of 3 by 4 is 4 upon 3. Make the denominator as the numerator as the denominator. Now some more numbers. What is the reciprocal of 5 upon 6? The reciprocal of 5 upon 6 is 6 upon 5. So I hope now the concept of reciprocals of fractions is clear. Now sometime what happens, there is a mixed fraction given to you like 3 1 upon 5. Now in this case how will you find out the reciprocal? So the first step will be to convert this into, please if you know the answer pause the video and reply to me in the comment section. Yes, the first step will be converting this into an improper fraction. 5 3 is 15, 15 plus 1 16, 16 upon 5. ये हो गया आपका improper fraction. Now what is the reciprocal of 16 upon 5? It will be 5 upon 16. I hope it is clear, students. So this is how we will find out the reciprocal of mixed fractions. Now I am going to explain you about the topic division of fractions. That means how do we divide the fractions? If two fractions are given to you, how will you divide them? Okay, so there are various steps involved, so step by step I am going to explain you, so please be patient and listen to me carefully. So step 1 is that if there are two fractions given to you, write whole number as a fraction, convert mixed fraction as improper fraction. जैसे आपको एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं. वी हैव टू डिवाइड 2 upon 7 by 3 upon 4, right? We have to divide like that. So the first step is write whole number as a fraction, convert mixed number as a improper fraction. यानी कि अगर कोई होल नंबर दिया है, जैसे कि आपका 2 दिया है, 3 दिया है, तो उसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है. So I have considered 1 as the denominator, right? अब हमने उसको एक फ्रैक्शन की तरह लिख दिया. We have written this whole number 2 as a fraction. 2 upon 1 is a fraction. Now the second step is to convert if there is any mixed fraction. अगर कोई mixed fraction है, जैसे कि आपका है for example
5 1/4. So you have to convert it into improper fraction. 4 5 is 20, 20 plus 1, 21/4. So 2 by 1 divided by 21/4. I hope it is clear. So this is step 1. Now what is step 2 which you need to follow while dividing the fractions? Step 2 is to find the reciprocal of the second fraction. जो आपका सेकेंड फ्रैक्शन है यानी डिविजर जिससे आप डिवाइड करेंगे. सी दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज द सेकेंड फ्रैक्शन. तो आपको जो दूसरा स्टेप होगा आपको सेकेंड फ्रैक्शन का क्या लेना है? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स what does reciprocal means? If you have understood, please pause the video and reply to me in the comment section. Yes students, you have to take the reciprocal of the second fraction and multiply it with the first one. तो इस केस में क्या होगा? सेकेंड फ्रैक्शन इज 3/4. सो इफ यू ऑल नो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. यस, एवरीबडी हु हैज कमेंटेड दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3, उनका आंसर सही है. तो हमने क्या किया? रेसिप्रोकल ले लिया ना. उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा आपका स्टेप 4, इसमें ये होगा कि आप इसको क्या करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया. Now I have taken the reciprocal and multiplied it with the first fraction. Done. Now can we reduce it? इसमें कुछ reduce हो सकता है? 2 3 नहीं होगा, 7 4 नहीं होगा. So the answer is multiply the numerators and multiply the denominators. अब देखिए ये multiplication हो गया. So this is how we used to divide the fractions. Now I will be taking some more examples to make it very clear और अच्छे से आपको समझ में आए. इसके लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लूँगी. आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर मैथ्स बुक, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ में आए. वन बाय वन आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज डिवाइड 12 by 1/2. राइट, 12 को आपको 1/2 से डिवाइड करना है. तो 12 तो आपका एक होल नंबर है. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी टू मेक दिस होल नंबर एज अ फ्रैक्शन. तो 12/1 हो गया आपका. नाउ द सेकेंड स्टेप, divide it with the second one. Now coming to the third step, as there is no mixed fractions, कोई भी mixed fraction नहीं है, as there are no mixed fractions over here, so the third step will be to take the reciprocal of the second fraction. पहला दूसरा, तो जो दूसरा fraction है जिसे हम क्या कहेंगे? डिविज़र. इसे हम डिविज़र भी बोलते हैं. तो we have to take the reciprocal of that and then we have to multiply it with the first one. So I have taken the reciprocal and multiplied. Now multiply the numerators and multiply the denominators. What will be the answer? It will be 24. Right? I hope it is clear. Taking the next example. So the next example is 8/3 divided by 2/9. So firstly we will write like this: 8/3 divided by 2/9. This will be your first step. Okay, now what will be the next step? If you all know, please pause the video and reply to me in the comment section. अगला step क्या होगा इसके बाद आपका? It will be 8/3 multiplied by 9/2. The third step will be taking the reciprocal of the second fraction and multiply it with the first one. अब आप इसमें कुछ reduce कर सकते हैं. देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ रिड्यूस हो रहा है, या तो आपका इस तरीके से, आइदर इन दिस वे, दैट इज आइदर वर्टिकली और आइदर डायगनली कुछ रिड्यूस हो रहा है. चेक करिए, डायगनली फ्रॉम दिस साइड, वर्टिकली फ्रॉम दिस साइड एंड वर्टिकली फ्रॉम दिस साइड. इफ समथिंग इज रिड्यूस्ड, जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे डायगनली रिड्यूस हो रहा है. 2 1s are 2 4s are. इन द सेम वे 3 1s are 3 3s are 9. From the same table we have done. Now the last step will be multiplying the numerators and the denominators. So 4 3s are 12 and 1 1s are 1. So what will be the answer students? आपका आंसर होगा 12. I hope this is clear students. Now taking some more examples of division of fractions. Now today I am taking so many examples so that once I will start solving the questions of the exercise, you all can solve along with me. साथ के साथ आप वीडियो प्ले करते करते क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ. ओके, सो माय नेक्स्ट एग्जांपल इज 3 3/4 divided by 2 6/12.
So as you all can see that both the fractions are mixed fractions. So now please tell me, what is the next first step which we have to do in this question? If you all know, you have to pause the video and reply to me in the comment section. And my best wishes to all of you for your exams. Okay, अच्छा स्कोर करिएगा. एंड येस, आप लोगों को अपने स्कोर्स पता चल जाएंगे वंस यू विल सबमिट इट. आपको अपने स्कोर्स उसी वक्त पता चल जाएंगे. एंड पेपर कैन बी सबमिटेड ओनली वंस. एक ही बार सबमिट होगा, तो प्लीज़ डू इट केयरफुली. नो मिस्टेक शुड बी देयर. सिट विद योर रफ कॉपी एंड पेंसिल. इफ देर आर सम कैलकुलेशंस, डू इन द रफ कॉपी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको 1 घंटे मिलेंगे. 1 hour इज मोर देन इनफ. सो योर आंसर शुड बी राइट. ओके, आई एम मिसिंग माई ऑल द स्टूडेंट्स. जो मेरे पुराने बच्चे थे, आई डोंट रिमेंबर ऑल द नेम्स, बट येस, अस्तित्व, हरकीरत, वर्षित्व, आनंद, स्वेक्षा, अंशिका, अनाया. देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. साक्षी, कर्तव्य, विधान. So there are so many students. I am missing all of them, but yes, because of coronavirus we all cannot meet. So if we have to be safe, we have to be at our homes. तो प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड. आप लोगों के स्कूल्स अगर नहीं ओपन हो रहे हैं तो भी आपकी जो ये पढ़ाई हो रही है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ क्लासरूम एनवायरनमेंट. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 4 3s are 12, 4 3s are 12, 12 plus 3, 15 upon 4. Okay, now the next one, 12 2s are 24, 24 plus 6, 30 upon 12. Now we have to divide it. Okay, so the next step is to take the reciprocal of the second fraction. जो दूसरा fraction है उसका क्या लेना है? Reciprocal लेना है. तो it will be 12 upon 30 and then multiply it with the first one. Now we have to check that can it be reduced either vertically or diagonally, vertically or diagonally. या तो diagonally या तो vertically, किसी भी तरह से reduce हो सकता है. Yes, it can be reduced. 4 1s are 4, 4 3s are 12, right? This is reduced. Now coming to this side, 3 10s are 30, 3 5s are 15. अभी फिर से reduce हो सकता है ये आपका. 5 1s are 5, 5 2s are 10. तो अब यहाँ पे अब क्या क्या बचा? 1 multiplied by 3, 1 multiplied by 2. So the answer is 3 upon 2. What is the answer? The answer is 3 upon 2. Right? So I hope all of you have understood it well. Okay, so I'm going to take the next example. So please pay attention. So students, the next example which I'm going to take is a little bit different. थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो in the first go, but most probably you will understand it. आपको समझ में आ जाएगा. So the example is example number 4, 25 divided by 4. आप इसको डिवाइड करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 2, राइट? ये आपका डिविजन है विच यू हैव टू परफॉर्म. सो इफ यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस लाइक दिस, सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट 25 by 4 इज डिवाइडेड बाय 45 by 2. दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्शन. जो न्यूमरेटर होगा वो आपका पहला फ्रैक्शन होगा एंड द डिनोमिनेटर इज द सेकेंड फ्रैक्शन. सो कैन वी राइट लाइक दिस, 25 upon 4 divided by 45 upon 2. Now the next step will be taking the reciprocal of the second fraction and multiplying it with the first one. So I have taken the reciprocal and multiplied it with the first one. Now the last step is to reduce it into simplest form. So how will we reduce it into its simplest form? We have to check either can we reduce it vertically, diagonally, vertically, diagonally. कहीं से भी reduce हो रहा है. 2 1s are 2 2s are 5 5s are 25, 5 9s are 45. What we have to do? We have to reduce it from the same table. Now 5 1s are 5. I am writing over here. 2 9s are 18. So what is the answer of this question? The answer of this question is
5 upon 18. Now taking one more example that will be a little bit different. कुछ इसी तरह से होगा पर थोड़ा सा अलग होगा. Okay? So that example is 9 divided by 3 upon 2. Here also this is the first fraction, this is the second fraction, because this is numerator and this is denominator. So first fraction is 9 in the form of whole number. So the step 1 was that to convert the whole number into a fraction. So we have taken 1 as the denominator by default if it is not given. Now the denominator is considered as the second fraction. Now the next step will be to take the reciprocal of the denominator and multiply it with the first fraction, right? Reciprocal of the second fraction and multiply it with the first fraction. Now can we check that it can be reduced or not? Obviously 3 1s are 3 3s are. Now it will be 3 2s are 6 and 1 1s are 1. So 6 upon 1 or 6 is the answer for this. So I hope all of you have understood how do we divide the fractions. Now your exercise has been started. अब आपकी exercise शुरू हो गई है. So to continue with the exercise 5D, I am going to solve the question. So the first option is 32 upon 15 divided by 12 upon 25, right? So what we have to do, this is first fraction, this is second fraction. So we have to take the reciprocal of the second fraction and multiply it with the first one. So second fraction का reciprocal होगा 25 upon 12, multiply it with the first one. Now what we have to do, if you all know the next step, please pause the video and reply to me in the comment section. अगर आपको अगला step पता है तो please video को pause करिएगा, comment section में ज़रूर reply करिएगा. Okay? So we have to check whether that we can reduce it or not. Can we reduce it? If yes, please reply with yes. If we cannot reduce it, then reply with no in the comment section. Okay? So yes, we can definitely reduce it. ये आपका जो है vertically, sorry not vertically, diagonally it can be reduced. Here also diagonally it can be reduced. 4 3s are 12, 4 8s are 32, 5 3s are 15, 5 5s are 25. This has been reduced by the table of 4. This has been reduced by the table of 5. Now 8 5s are 40. 3 3s are 9. Okay. Now can we reduce it? No. So if you want, you can write it into a mixed fraction. 9 4s are 36. आप सभी को पता है 36 में 4 ऐड करेंगे तो 4 4 by 9. We can write like this also. Just match the answer. बुक के पीछे जो दिया हुआ है. If it is 40 by 9, then it is also correct. If it is 4 4 upon 9, then also it is correct. Okay. So I hope all of you have understood option number 1 of exercise 5D. Are you all enjoying, students? So students, now I am going to solve the second option, that is option number B. आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, जब भी आपको समझ में आता है अच्छे से तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा. ओके. सो 18 upon 14 divided by 12 upon 21, right? So now what we have to do in this question, we have to take the reciprocal of the second fraction, multiply it with the first one. Now what is the next step? अगला स्टेप क्या है? वाई डू आई आस्क द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन ऑन द सेम क्वेश्चन. मैं आपसे बार बार स्टेप्स इसीलिए पूछ रही हूँ सो दैट यू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट यू अंडरस्टैंड. अगर आप इसको बार बार मेरे साथ बोलेंगे या करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है इन एवरी क्वेश्चन. ओके. सो वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. वी हैव टू रिड्यूस दिस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. सो वी ऑल कैन सी दैट ये आपका जाएगा 3 2 6s are 12, 2 9s are 18, 3 2s are 6, 3 3s are 9, राइट. डायरेक्टली भी रिड्यूस हो सकता था आपका 6 2s are 12, 6 3s are 18, पर आप ऐसे दो दो टेबल से भी रिड्यूस कर सकते हैं. आइदर यू रिड्यूस इट डायरेक्टली 6 2s are 12 and 6 3s are 18, बट यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2. 2 6s are 12, 2 9s are 18. अब 6 और 9 3 के टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं. 1 from numerator, 1 from denominator. 3 2s are 6, 3 3s are 9. Now coming to this one,
7 से रिड्यूस हो रहा है. 7 2s are 14, 7 3s are 21. Now 3 3s are 9 and 2 2s are 4. How do we write 9 upon 4 in mixed fractions? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. 1 एंड येस मृत्युंजय, आप भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं. सो आई हैव नॉट टॉट इन योर क्लास बट येस आई लव द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th C ऑल्सो. सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं. ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड. दे गिव रिस्पॉन्सेज एंड दैट्स व्हाट आई लाइक इन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. ओके, सो कीप up doing your good work, be like this, and if you have understood, वीडियो को लाइक करके जाइएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड. This is your class work, okay? A and B option. C and D, you can do it as your homework. Do it in your homework copy. C option, D option. A option, B option is class work, okay? Subscribe the channel and press the bell icon.